हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन इन्वेंशन चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो छोटा एक वीडियो है, छोटा सा टॉर्च सर्किट हम बना के दिखाएंगे। तो ये छोटा सा एक सर्किट है। देखिए ये टॉर्च सर्किट है। तो बहुत ही छोटा सा एक सर्किट है। इस सर्किट की मदद से आप लोग इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच के बदले में ये टॉर्च सर्किट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट है 6 वोल्ट डीसी रिले लिया, रिले के साथ एक 4007 डायोड को कनेक्ट कर दिया। अभी इस रिले के साथ BC547 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, कलेक्टर पिन को डायोड का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ एक 1 के क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। रेजिस्टेंस का एक पिन बेस पिन के साथ कनेक्ट किया और दूसरा पिन सर्किट का जो टच सर्किट है, टच सर्किट का आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर दिए थे। इस टच सर्किट का मिडिल जो पिन है, मिडिल पिन आउटपुट पिन है। सर्किट का मिडिल पिन और रेजिस्टेंस का एक पिन एक साथ कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स अभी इस सर्किट का पॉजिटिव पिन और डायोड का पॉजिटिव पिन एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स फिर और एक वायर लिया जो सर्किट का नेगेटिव पिन और ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स कनेक्शन को आप लोग ठीक से देख लीजिए। देखिए मेरा ऑलरेडी पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और फिर और एक वायर लिया और एक वायर को रिले का जो कॉमन पिन है, रिले का कॉमन पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये 5 वोल्ट डीसी SMPS पावर सप्लाई है। ये रेड वायर AC इनपुट वायर है और ये जो वायर है दिख रहा है ये DC 5 वोल्ट आउटपुट वायर है। ये आउटपुट का जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर के साथ रिले का जो
कॉमन पिन है, रिले का कॉमन पिन का एक साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए ये 5 वोल्ट एलईडी है। एलईडी का जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन को रिले का नॉर्मली क्लोज पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये 5 वोल्ट SMPS का नेगेटिव वायर और एलईडी का जो नेगेटिव वायर है एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी सर्किट का पावर सप्लाई कर देते हैं। ये येलो वायर जो दिख रहा है ये नेगेटिव वायर है और ये रेड वायर जो दिख रहा है ये पॉजिटिव वायर है 5 वोल्ट का। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो गया और 5 वोल्ट SMPS का जो पावर सप्लाई है वो भी कनेक्ट कर दिया। तो अब ये टच सर्किट को ऑन करते हैं। देखिए कितना सुंदर ये काम कर रहा है। तो आप लोग चाहे तो ये सर्किट की मदद से बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।